that is about contract, a valid contract. So contract must be, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, फ्री कंडीशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता, और उसकी डेफिनेशन दी हुई है वो बताया है, और बाद में कोर्स फ्रॉड मिस प्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब इससे कंसेंट किया तो वो फ्री कंसेंट नहीं दे रहा था, बाद में कोर्सन का पूरा दिया था सेकंड स्लाइड में। तो कोर्सन वो होता है कि किसी को थ्रेटन करना, कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा किसी को धमकी देना कि हम आपको या आपकी किसी रिश्तेदार को मारेगा, कुछ भी करेंगे, थ्रेटन करना, और उसमें ऐसा पार्टी के लिए नहीं होता, किसी थर्ड पर्सन को भी कर सकते हैं, तो वो कोर्सन का कोर्स होता है, और जो कोर्स से जो कंसेंट ले सकते हैं वो बाद में वॉइडेबल होता है। तो बाद में वो बट जिन पार्टी का कंसेंट लिया होता है कोर्ट के ऊपर, उन पे होते हैं प्रूफ का बर्डन, बेसिकली वो। So more or less, yes, let's understand what it says in detail. One, for a contract to be valid, the consent of the parties must be genuine. Consent means you agree to it. किसी चीज के लिए आप समर्थन देते हो, हाँ कहते हो, बिकॉज नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टियों के बीच में है, तो दोनों पार्टी अपनी मर्जी से अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो ही दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So the principle of consensus ad idem is followed, which means that parties entering into the contract must mean the same thing in the same sense. What does that mean? Consensus ad idem means parties entering into the contract must mean the same thing in the same sense. इसका मतलब क्या हुआ? Same page, yeah. Means that they both mean the same thing. that's what it says, right? अगर मैं कहूँ, अगर आप पूछो सर एग्जाम में कितने मार्क्स आने चाहिए, और सपोजिंग मेरे पेरेंट मेरे को बोलते हैं कि अगर तेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो मैं तेरे को आईफोन दिलाऊंगा, राइट? अब मेरे एग्जाम में 70% आते हैं, मुझे आईफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? It really depends, like what is their definition सोच रहे हो, राइट? and what is your definition of जैसे आपके पेरेंट बोलेंगे कि मेरा बेटा तो हमेशा फेल ही होता रहे, 20% मुश्किल से आते हैं, 70% आ गए, 3.5 गुना परसेंटेज आ गए, इसको आईफोन के, इसको एप्पल की कंपनी दिला दो. और मेरी अम्मा हो सकती है 99.97% आएगा तो बोलेगा 0.03% कम क्यों है, ये अच्छे मार्क्स नहीं है. तो अच्छे मार्क का डेफिनेशन क्या है? फॉर यू द डेफिनेशन ऑफ गुड मार्क्स मे नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ गुड मार्क्स एज इन माई माइंड. सो अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो किसी चीज का अगर डेफिनेशन है तो दोनों पार्टी उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. अगर दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग हो गया तो वो भी कंसेंट नहीं होगा. So the parties to the contract must have the same understanding in regard to the subject matter of the contract. Now, mere consent is not enough for a contract to be enforceable. The consent given must be free and voluntary. सिर्फ आपने हाँ के लिए इनफ नहीं है. आपने जब हाँ कहा तो अपनी मर्जी से कहा, वॉलंटरीली कहा. सो कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका कंसेंट फ्री एंड वॉलंटरी नहीं होगा? द डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एज consent that is free from 5 things mentioned है: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. ये 5 चीजों में से कोई भी एक अगर ना हो तो ही आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा. And consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. ये 5 के ना होते हुए अगर किसी ने कंसेंट दिया है तो वो फ्री कंसेंट है, वरना नहीं है. सो क्लियरली फ्री कंसेंट मींस एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. सो व्हेन द कंसेंट व्हिच इज गिवन इज अफेक्टेड बाय दीज एलिमेंट्स, इट कॉल्स इनटू क्वेश्चन वेदर द कंसेंट गिवन वाज फ्री एंड वॉलंटरी. इनमें से कोई एक भी चीज अगर नजर आ गई तो सवाल उठेगा, क्या सच में ये कंसेंट फ्री था? Mostly the answer is no. The objective of this principle is to ensure that judgment of the parties while entering into the contract wasn't clouded. किसी दबाव में आके या सही तरह से आप सोच ना पाओ, मैं करूं या ना करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Total free mind से you should be able to take the decision. So therefore consent given under coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake has the potential to invalidate the contract. इनमें से कोई एक भी चीज अगर नजर आ गई
तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप साइड में सेट कर दो, कह दो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, पॉसिबल है. So now they have mentioned these things but explained one of them. For example, such a factor which would invalidate a contract is the presence of coercion. So according to IC 1872, coercion is defined as commission or threat to commit any act forbidden by the IPC or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into agreement. आईपीसी इंडियन पिनल कोड जिस चीज को मना करता है, ऐसी किसी धमकी से अगर आप किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाने की कोशिश करते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये कोअर्जन है. एंड दे सेड टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विच मीन्स टू द हार्म ऑफ एनी पर्सन. A very crucial important part of the law is the phrase the prejudice of any person whatever. कोर्शन का जब डेफिनेशन आईसीए के अंदर डिफाइन किया जाता है, दे आर नॉट मेंशनिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, दे आर सेइंग टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, विच मीन्स व्हाट, which means coercion could be directed against the prejudice of any person and not just the party to the contract. कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं आपका कंसेंट चाहता हूं लेकिन मैं धमकी किसी और को दे रहा हूं तो क्या इसे आपके खिलाफ कोercion माना जाएगा? लॉ सेज यस. जरूरी नहीं कि धमकी सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाए जिसके ऊपर जिसका कंसेंट मुझे चाहिए. इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट ओनली द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉजेज द कोercion. एंड जरूरी यह नहीं कि धमकी देने वाला व्यक्ति भी मैं हूं जो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है. कॉन्ट्रैक्ट मुझे करना है आपके साथ, लेकिन मेरी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर धमकी दे रहा है तो भी उसे कोercion माना जाएगा. So even a third party to the contract can cause coercion to obtain the consent, as was seen in the case of Ranganayakamma versus Alvar Sethi, where a widow was coerced into adopting a boy by the boy's parents by not allowing the corpse of the widow's husband to be removed from the home until the adoption was made. इसके लिए सपोर्ट करता हुआ केस लॉ क्या है? एक केस में एक औरत का पति मर गया था और उस पर धमकी दी गई कि जब तक तू इस बच्चे को गोद नहीं लेगी तब तक तेरे घर से तेरे पति के लाश को हम निकलने नहीं देंगे. So technically that is a form of coercion. So even if she makes any contract, it cannot be held as a valid contract. Finally, what is meant by burden of proof? साबित करना, right? So दो पार्टीज होती हैं, एक केस करता है, दूसरे के खिलाफ केस होता है. So सबूत किसको पेश करना है? The burden of proof in case of coercion lies on the party whose consent was coerced. आप मेरे खिलाफ धमकी करते हो तो प्रूफ मुझे देना पड़ेगा कि आपने मेरे पे कोercion किया है. And when consent of a party was obtained through coercion, the contract becomes voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Becomes voidable का मतलब क्या है? Contract becomes voidable का मतलब क्या है? Contract is not void, like contract finish नहीं हुआ. It is on other party to Which party? जिस पर coerce हुआ है. Right. दो चीजें होती हैं. One is called a void contract, which means the moment you say the contract is void, it means it does not matter what the parties want. Automatically the law says कि ये contract valid नहीं है. That is a void contract. Voidable contract वो होता है जहां पे किसी एक पार्टी को ये चॉइस दिया जाता है कि अगर आपको कंटिन्यू करना है, यू कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, and if you do not want the contract to continue then also it is your choice. So in case of coercion, अगर मुझ पे coercion हुआ है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मुझ पे coercion हुआ है. लेकिन अगर मैंने ये सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि मुझ पे coercion हुआ है तो कोर्ट मुझे चॉइस देगा, क्या अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ना बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होगा. अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? Yes. एंड एंटायर फ्री कंसेंट एंड कोercion का मामला क्या है? Let's take a look at the questions then. Adam, a customer, was forcibly not allowed by a shopkeeper to leave the store until he purchased the item he inquired about. Adam purchased the item and was allowed to leave. Which of the following, as per your understanding of the passage, is correct regarding the validity of the contract?
Which one? It's not that difficult. Huh? Before Bombay. The contract is void as Adam was forcefully made to purchase the item and was hence coerced. यार अभी तो मैंने डिटेल में समझाया and or it literally was the last thing we did. What happens when coercion has been proved? It becomes a voidable contract. Void means automatically void. Voidable means it is the choice of the person who was coerced. So in this case coercion हुआ है तो फिर void हुआ या voidable हुआ? So A valid तो नहीं होगा, B void भी नहीं होगा, D void भी नहीं होगा. The only reasonable option has to be C. The contract is not void, but can be made void if Adam wishes so, as he was coerced. So voidable means it is up to the choice of the person who was coerced to decide whether it is valid or void. Clear? कोई confusion नहीं होना चाहिए. चलो. Now Sheila entered into a contract to purchase a 3-year-old cow from a farm. The seller delivered the cow and she took ownership of the same. Sheila later came to know that the cow sold to her was 6 years old. As per your understanding of the passage, which of the following would truly describe this transaction? You're saying C. C, the contract can be invalidated as there was a mistake as to the fact of age in this transaction. क्यों? तो 3 year old की cow चाहिए थी उसने BT 6 year old की Because the contract will remain the same to both the parties. हाँ? The contract will remain the same to both the parties. हाँ तो So the Sheila, according to Sheila, it was 3 years old. हाँ But the owner who sold the cow हाँ uh, signed it under the wrong facts that it was 3 years old when the cow was 6 years old. okay so So it's can be invalid. you're saying the contract can be invalidated as there was a mistake. Everybody's saying it's a mistake. What is mistake in a contract? When you do something without knowing. Huh? Okay, it's not a mistake. Why is it not a mistake? Because a mistake cannot be done purposefully. Okay. And obviously, though, it cannot be that the owner didn't know that the What? Huh? He should know the facts before Why? selling the cow. Why? Because he is taking that responsibility. What? That the contract was based on that the cow is 3 years old. That's why Sheila came into the contract. But turned out that it was 6 years old. Yes. So, and the other party also, the one who was selling the cow, also came into the contract, the same contract, but it didn't mean the same thing for both of them. Okay, so why is it a mistake? Yeah, it's not a mistake. Then what is it? Is coercion just when you trick someone? Coercion? Yeah. According to the definition in the passage, when you do something which is forbidden by the Indian Penal Code, in terms of harming someone, then it turns out to be coercion. A. The contract cannot be invalidated as she had voluntarily taken ownership of the cow. How do you know that? But also at the same time, she came into the contract to purchase a 3-year-old cow. Correct. 3-year-old cow. So It cannot be the first. Okay. Even came into the contract voluntarily, the facts were wrong. Okay. So see, how do we know she had voluntarily taken ownership? She wanted a 6-year-old cow. She wanted a 3-year-old cow. Turned out to be 6-year-old. Can I say it is voluntary? No. Can I say that there was a mistake? Mistake, first of all, is not defined in the passage. I don't know what a mistake is.
Correct. And even if I apply external law, mistake is a genuine mistake where neither party intends to do anything wrong. Did the owner intend to sell a 6-year-old cow as a 3-year-old cow, or did he do it unknowingly? I don't know. So mistake है कि नहीं मुझे नहीं पता. And coercion है क्या? किसी ने कोई धमकी दी है? नहीं. So B says the contract was not made with her free consent, as it would not have otherwise been given had she been aware of the real age. I don't know the reason why it is not, but is it true that she did not agree to what she wanted? She wanted 3-year-old. If she had known this was a 6-year-old, would she have purchased it? No. So she thought something which was not true. What it was, fraud, misrepresentation, mistake, coercion, I don't know. But one thing is for sure, that whatever it is not what she wanted. So the only reasonable answer that I can give in this case has to be B. You get that? You cannot assign a reason. I do not know under what reason. But इतना तो पता है जो चाहिए था वो नहीं मिला तो free consent नहीं है. So the reasonably safe answer has to be the second one in this case. Say it is not a valid contract without giving a reason. Clear? You cannot call it a mistake because mistake implies ना उसको पता था ना सामने वाले को पता था. शीला की तरफ से तो मुझे जानता हूं, but how do you know whether the seller knew it or not? If the seller did not know it but had means of knowing it, then according to external knowledge, it could be misrepresentation. And if the seller knew it and still tried to sell it, it could be fraud. But is it fraud? Is it misrepresentation? Is it mistake? I don't know. So my reasonable answer is B in this case. Clear, everyone? Okay. Now, John and Manoj were in the business of trading computer equipment. John had regularly threatened Manoj physically so that he could be his exclusive business partner. The court passed a judgment invalidating the contract based on Manoj's complaint alone. Was the court justified in doing so? Which one? A. A. A के साथ कौन कौन है? B, anybody? C. D for Delhi. Confusion कहां पे है? फैक्ट समझ में आ गए? Okay. John and Manoj are doing some business, and John threatens Manoj that तुझे मेरे साथ ही धंधा करना है. तो कोर्ट जजमेंट मनोज ने जाके कंप्लेन किया और कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. क्या कोर्ट का जजमेंट सही है? If you say no, then either A or C, and if you say yes, then B or D. Going with A, it says no, as the court decided the matter on the complaint alone with no proof from Manoj. हमने कोअर्शन का क्या देखा था? कोअर्शन का एंड का जो पैसेज था, one, whoever is complaining that it is coerced, first of all has to prove that that coercion was done. Burden of proof की बात करते हैं, right? यहाँ पे मनोज ने कंप्लेन किया एंड कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया. इज दैट इनफ? विदाउट प्रूफ? नो. सो no, A makes sense. C क्या कहता है? No, as the fact that Manoj continued the business with John even after such threats shows that he wished to continue business with John so that the court is not justified. Even if Manoj continues the business, that does not show that he's willingly doing it. It's possible he's doing it because he's afraid. So C does not make sense. And B and D to nahi hai. B says the mere fact that coercion is employed would automatically invalidate. No. Coercion में हमने देखा है. Invalidation void नहीं होता, voidable होता है. And D, yes, because it is John who should prove. नहीं, जिसने complain किया है उसको prove करना पड़ेगा. So my reasonable answer, in fact the only answer in this case is definitely A.
Clear? Okay. Now, Chan is a new trader in the market. He entered into a contract with another trader who had the biggest market share. However, Chan later felt that he might have made a mistake and wished to invalidate the contract, claiming he felt pressured by the big trader. Can the contract be invalidated? I think consent will be after testing. Huh? The consent will be after the contract is signed. You tell me. Let's make a situation. Your parents make a deal with you that you get 90% in the exam and we will give you a new iPhone. Right? एग्जाम हो गया था 90% आप अग्री करते हो और 90% आने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा है हमको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखना वैलिड व्हाट वुड यू से कैन द कंसेंट बी अफेक्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट यस सो उसको बोलने दे ना भाई उसका आईफोन है तुझे क्यों टेंशन हो रही है तेरे को मेरे को एंड्रॉइड ही मिलने वाला है So after the deal has been made, the consent can be invalidated, according to you. No, if all the facts are correct as were not false or present, if the contract is not, then But some circumstances may exist where it is yes, like what example is what? pressurized? What pressurized? That he later realized that he made a mistake signing the contract. Huh? He wishes to step back from that. So So he doesn't wish to have a consent on the contract. so anyone else? B for Bombay. You're saying no, as he gave free consent to the contract and being pressurized later does not invalidate a contract. Anything against A or in support of B? Okay, let's take 2 points. One, at what point of time is the consent important? Free and voluntary consent is important at what point of time? Not before. At the time of signing the contract. Before का कोई फर्क नहीं पड़ता है, after का क्या लेना देना है? At the time of signing the contract, the consent should be free and voluntary. Yes. Second point, what did the company do to affect free consent of Chan? Chan feels he is pressurized, right? Did the company do any pressurizing? फील तो कुछ भी हो सकता है. इवन आई एम फीलिंग वेरी प्रेशराइज्ड बाय यू गाइस टुडे. 12:30 को तो आज प्री मैच ये चालू होने वाला है और तुम लोग क्लास में आकर मेरा सर खाने वाले हो. दोपहर को टेस्ट के लिए भी सबने साइन अप कर दिया जबकि मैंने बोला था मुझे मैच देखना है. आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्रेशराइज्ड. क्यों क्यों मैडम के हिसाब से तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद. तेरे हिसाब से नहीं हो सकता क्योंकि पहले भी तूने यही कहा. इज राइट right at the time of entering into the contract, fine. And second, what you don't have to say anything. I was feeling something but my feelings are not forced by you. So then in that situation, why is there any problem? So कोई भी अगर ये सच है कि he can invalidate the contract, तब तो यार कोई भी contract खत्म होने के बाद बोलेगा I'm feeling very pressurized contract in. आपके feelings पे थोड़ी जाते हैं. What if it was the company who did something? What did the company do? We are presenting a hypothetical situation. What do you think the company does? Making him feel pressurized. When? They invalidate the contract. When do they pressurize him? The time of signing the contract. After. At the time of signing the contract. After, if they're doing what he has already signed a contract. After signing the contract, क्या pressure लेके आने वाले हैं? उनको pressure ले आने की जरूरत क्या है? If already you have a contract with me,
What do I need to pressurize you for? Any problem you occur, I'll take you to the court. पूरा कानून मेरे साथ है. Why do I need any pressure after you have already signed the contract with me? If at the time of signing the contract I have put pressure on you, you can claim I'm forcing you to enter into the contract. But once you've already entered into the contract, what pressure do I need? I already have the complete law on my side to make you do whatever we have agreed to in the agreement. कोई बेवकूफी होगा जो प्रेशर करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद. Contract is, I mean, you don't need any pressure of any wrong kind. As long as you want something which the other party has signed to, you simply go to the court and say, Milord, contract, make them do. आपको कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है, लॉ करवाएगा सामने वाले से. Do you get that? Invalidated. Contract after sign can only be invalidated. Consent at the time of entering into the contract is the only thing which is required. After that, it can be only invalidated if it's coerced or threatened. After the contract has been signed, what coercion is possible? Give me a situation where there's a. At the time, it was coerced or Yes. threatened. Yes, there was a coercion. Threat is part of coercion. The single term is coercion. Yeah. Yes. If I can prove that at the time of entering into the contract, you coerced me. If you had not coerced, I would not have entered into the contract. Because you coerced, I entered into the contract. If I can prove it, then the court will let me decide whether to consider it valid or void. That means the court will say this is voidable at my option. You get that? Okay. Chalo. Moving on. So in this one, definitely B. Feeling pressurized is nothing. Now, a football player was interested in joining a certain club. However, his manager detained his assets until he joined another club of the manager's choice. The player then entered into a contract with the club chosen for him and reached the premises. Is it too late now for him to change his mind? This is straightforward. मेरा मैनेजर मेरे को धमकी देता है जब तक तू साइन नहीं करेगा तब तक तेरे प्रॉपर्टी जायदाद पे कब्जा करके बैठूंगा तो मैं साइन करता हूं. नाउ इफ आई वांट टू गेट आउट ऑफ द अग्रीमेंट कैन आई? सिंपल. आई प्रूव कोercion. The court decides in my favor, then I can get out. So the reasonable option is he. Is it too late? No, it is not late for me. तो A भी तो नहीं है because coercion तो clearly था. And second, even though the contract may be with the club, but the law says that even if somebody else forces me, I can still get out of it. So the manager also cannot claim, the club cannot claim कि club ने थोड़ी coercion किया है. किसी का भी coercion होगा तो coercion माना जाएगा. And third, contract is void and it does not have the, no, it's not void. It is voidable at the option of the player. So option D. Clear, easy, basics of contracts. Sure. Next one then, passage. Red.
Right? Understood? Yes. What is it about? What does that mean? It's like the canonical assembly as the belief that anyone who is willing to convert, but anyone. First of all, there was an anti-conversion bill that said that anyone who is forcibly converting someone else, like forcing them to convert their religion, that it will be considered null and void. The another one was anyone who wishes to convert on their own has to inform the district magistrate within 30 days, or if it is and go to the magistrate to confirm their identity. If they don't do that, the conversion will be again like considered null and void. There was a third thing about marriage. So if a marriage is done with the intention of conversion, it can be reported to the marriage court or uh, Don't focus on the details as in which court and that amount of punishment. It should be reported. See, all details like that you don't have to remember because you can always refer back to the passage. You should understand the main funda क्या है, कितना punishment होगा, कितने दिन के अंदर चाहिए, किसको report. All that is technical details which you can always refer to in the passage. One, you should get a broad idea about what the entire thing is about, right? And this is about religious conversion या धर्म परिवर्तन, right? So a state assembly passed the right to freedom bill, which is anti-conversion bill, and amid opposition protest. तो सरकार करना चाहती है, एंड ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन है, तो वो उसके खिलाफ है, राइट? सरकार अगर बोलेगी कि ऑक्सीजन इज कंपलसरी, तो ऑपोजिशन का काम क्या है? नहीं, ऑक्सीजन शुड नॉट बी मेड कंपल. चलो, जोक्स अपार्ट. The bill states, according to, and remember, it's not a law, it's a bill which has been passed. It says no person shall convert or attempt to convert either directly or otherwise any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or any other fraudulent mean, or by marriage. कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता अगर ये करने के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, सेम थिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का लफड़ा है. सो अगेन, इफ आई गेट द कॉमन थीम बिटवीन द लास्ट पैसेज एंड दिस पैसेज, इट इज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट. अपनी मर्जी से अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति डरा धमका के और बाय अल्योरमेंट. व्हाट इज अल्योरमेंट? नो, इट्स नॉट ब्लैकमेल. दूसरी कोई चीज दिखा के Bribing. yeah. Bribing, right? So consent, when we saw free consent in contracts, वहां पे bribing का कोई लेना देना नहीं था. बट इसके अंदर तो एक और चीज ऐड की है, allurement. कोई आपको बहला फुसला के भी अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो वो भी अलाउड नहीं है, राइट? एंड नॉर शैल एनी पर्सन अबेट और कंस्पायर फॉर कन्वर्जन. ना सिर्फ कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति, लेकिन कन्वर्जन की मदद करने वाला व्यक्ति भी अंदर जाएगा. It however provides an exemption in the case of a person who reconverts to his immediate previous religion, as the same shall not be deemed to be a conversion under this act. Supposing X religion से मैंने Y religion में धर्म परिवर्तन कर दिया था, और अब Y से मैं वापस X के अंदर अगर आ रहा हूं तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा. उसके लिए भी एक मस्त हिंदी टर्म बनाया गया था बीच में. आई डोंट नो इफ यू नो दैट टर्म. घर वापसी, राइट? इफ अ पर्सन, you never heard this term before? Ghar Vapsi. So people who got converted from one religion to another, when they were brought back to the same religion, some people started calling this as Ghar Vapsi. Anyway, it's not a technical term. So, according to the proposed legislation, complaints regarding conversion can be filed by family members or any other person who is related to the individual who is getting converted. रिश्ता होना जरूरी है.
A jail term along with fine have been proposed for those violating the law in case of people from general category. An enhanced jail term and fine has been mooted for those converting minors, women or persons from SC/ST. जनरल कैटेगरी को तो कन्वर्ट करोगे तो पनिशमेंट में जेल होगा, फाइन होगा, लेकिन माइनर विमेन या SC/ST को करोगे तो ज्यादा जेल होगी. कितना doesn't matter. Now, the bill also envisages payment of a compensation on court orders to victims of conversion by the person attempting the conversion and double punishment for repeat offenses. ना सिर्फ धर्म परिवर्तन करने वाला पनिश होगा, वो आपको कॉम्पनसेशन भी देगा. एंड अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार किसी और को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो जितना भी रेगुलर पनिशमेंट है उसका डबल उस पर ठोका जाएगा. Marriages conducted with the intention of conversion can be declared null and void by a family court or jurisdictional court. किसी के साथ आप शादी करते हो इसी इरादे से कि आप उसका धर्म चेंज करो तो भी ये वैलिड नहीं है. And the offense of conversion has been deemed to be a cognizable and non-bailable that can be tried in magistrates court under proposed law. Now, what is a cognizable offense? Offenses are of two types. किसी को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, किसी को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल में 3 इयर्स से ज्यादा जेल रुकेगा. वो तो पनिशमेंट की बात कर, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल डिफरेंस. कैसे ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस किन चीजों को कहा जाता है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहा जाता है? कॉग्निजेबल मोस्टली क्राइम में होते हैं जो सोसाइटी को ज्यादा हार्म करते, मतलब सोसाइटी को एज होल हार्म करता है. हाँ, बट एग्जैक्टली कहाँ पे आता है? No. So to understand the primary difference, you have to understand that whenever a law has been broken or somebody has committed a crime, it does not automatically mean that the police can come and arrest them. So if something is defined as a cognizable offense, then that means that the police does not need anybody's permission, they can directly come and arrest. But in case something is a non-cognizable offense, that means जब तक मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं करता, जब तक वारंट नहीं होता, तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता. So the primary difference is whether the police can directly arrest or does it need a warrant for the arrest. So in this case, it is a cognizable offense, which means police can directly make an arrest. And non-bailable offense. What is the difference between a bailable and non-bailable offense? Bailable में bail मिल सकती है, non-bailable नहीं मिल. वैसे लगता है लोगों को, नहीं. जो तो बोल रहा है वो है, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पे आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे यू हैव टू अप्लाई फॉर अ बेल एंड द कोर्ट कैन डिसाइड नॉट टू गिव यू अ बेल. आपको ऑटोमेटिक बेल नहीं मिल सकती, राइट? सो नॉन बेलेबल डज नॉट मीन आपको कभी बेल नहीं मिल सकती. बेलेबल मीन्स ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर बेल. नॉन बेलेबल मीन्स द कोर्ट विल डिसाइड वेदर यू कैन बी ग्रांटेड बेल और नॉट. So if something is a cognizable and non-bailable offense, it means it is considered to be a very, very serious crime. Now, any person intending to convert, now पूरा procedure है कि conversion करना है तो क्या है? So any person intending to convert to another religion after the law comes into force will have to notify the district magistrate 2 months in advance. On the spot नहीं हो सकता. Person who is carrying out the conversion must provide 1 month notice. And the district magistrate must conduct an inquiry through the police on the real purpose of the conversion. जिसको खुद कन्वर्ट होना है 2 महीने का नोटिस दो, जो कन्वर्ट करने वाला है वो 1 महीने का नोटिस देगा, और इसके बाद भी पुलिस के थ्रू डीएम इंक्वायरी करवाएगी क्यों हो रहा है भाई कन्वर्जन. हाँ हाँ तो कन्वर्ट करवा रहे. So does it also include अगर किसी की शादी हो रही है and वो जो है person A person B के religion में convert हो रहा है. Who, suppose you would decide today that I want to convert into the religion of the flying monster. Come to you कि आप. So if I am the official who has the power to convert your religion, हाँ. so you want to convert, you give 2 months notice. I will make you convert, I have to give 1 month notice. In the case of marriage, the other partner also has to give the. Does the partner convert you or does the priest convert you? So the person who is actually doing the conversion process, which in most cases would be the religious leader, will also have to give a month's notice, right? Not informing the authorities will result in a prison term of 6 months to 3 years for persons who convert
and a term of 1 to 5 years for those carrying out the conversion. जो कन्वर्ट हो रहा है उसको भी सजा मिलेगी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और जो करवा रहा है कन्वर्जन उसकी भी वाट लगेगी. The bill also requires the person who gets converted to inform the district magistrate of the conversion within 30 days, and he or she must appear before the DM to confirm their identity. जो कन्वर्ट हो रहा है 30 दिन के अंदर उनको ये भी बताना है मैं कौन हूं, मेरा प्रूफ क्या है कि मैं कौन हूं. And not informing the DM will lead to conversion being declared null and void. So conversion is being taken very very seriously and full on process. 2 महीने पहले से मिनिमम स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करना. आया समझ में? चलो. Now, would it be correct to say that this Karnataka bill altogether prohibits conversion? C. जब ये बिल मेथड बता रहा है कन्वर्ट कैसे करना है, तो टोटल प्रोहिबिशन कैसे हुआ? यस वाले दोनों ही ऑप्शन गए. नो में इट सिर्फ रिकन्वर्जन अलाउ करना नहीं, बट कैसे कन्वर्ट करना उसका प्रोसीजर बताया. दैट मींस इट इज अलाउइंग कन्वर्जन. It's only putting restrictions, but it is not totally prohibiting it. So my only answer definitely is C. Now, imagine a situation when person A converted to religion B from religion C before the commencement of this bill. Now, A wants to reconvert to his original religion after the bill has become law. What procedure does he have to follow? D for Delhi, none of the above. Baki Janta? Pragya wants to go back to the passage. Let's see the passage. Anji? D for Delhi. क्यों? None of the above क्यों है? क्योंकि वो रिकन्वर्जन कन्वर्जन में आता ही नहीं है. ये सारा प्रोसीजर तो तब फॉलो करना है जब कन्वर्जन हो रहा है. एंड पैसेज यही बोलता है कि अगर आप घर वापसी कर रहे हो तो वो तो कन्वर्जन ही नहीं है. जो कन्वर्जन ही नहीं है तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है? एंड हियर ए इज कन्वर्टिंग फ्रॉम बी टू सी एंड गोइंग बैक फ्रॉम सी टू बी. दैट मीन्स इट डज नॉट इवन फॉल अंडर कन्वर्जन. तो जब घर वापसी कर रहे हैं, कन्वर्ट तो कर नहीं रहे, तो फिर पति क्यों? सो नन ऑफ द अबव. क्लियर? Okay. Now, imagine a person luring a tribal to convert to his faith by promising him a part of his land and money. Can this be questioned under the bill? This also should be simple and straightforward, right? Because we had seen the one extra thing जो conversion के free consent में आता है, which was allurement, bribing, right? किसी को अगर आप घूस खिला के भी करोगे तो भी उसे क्वेश्चन किया जा सकता है. So you cannot say A, yes, as long as tribal does not have any problem with it. एक तो contradictory. अगर tribal को problem नहीं है तो उसको क्वेश्चन कर सकते हो. Makes no sense. And no, tribal people have the freedom to choose any religion. कहाँ पे लिखा है? And this aspect is neither prohibited nor no, it is allurement का clear cut mentioned है कि अगर कोई बहला फुसला के कोई bribe दे के भी convert करता है तो it is not valid under the proposed law. So my best option is yes, it is the case of induced conversion by way of allurement. अगर allurement का मतलब समझ में आ गया vocabulary के हिसाब से तो this question is simple and straightforward. ना समझ आए तो भी कर ही सकते क्योंकि allurement शब्द यहाँ पे लिखा है, वहां पे भी लिखा है, मीनिंग ना समझ में आता हो तो भी एप्लीकेशन तो समझ में आ ही जाएगा. चलो. Now, a person gets converted to a religion of his choice by following the procedure as stated in the bill.
and even after this his family members have a problem with it. Can they get his conversion nullified? A. हाँ जी. A. सो जब तक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है तब तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती. तकलीफ होगी कंप्लेन करेंगे बट कानून कुछ नहीं करेगा. लॉ इज ओनली इज कंसर्न विथ फॉलोइंग द procedures, and here it says that he followed the procedure. So even if they complain, can it be nullified? Technically no. So A या B में से कोई एक one. So C तो नहीं हो सकता because nowhere it says only a converted person can nullify. In fact, it mentions family members or relatives can apply for it. So C तो नहीं है, and C नहीं है तो D भी नहीं है, and extraordinary powers कुछ पता नहीं है. So my best option, the only option is process is followed, so no nullification. Okay. A person got another person converted to his religion through fraud, and now the fraudulently converted person has written a letter to the district magistrate for compensation. Can the district magistrate award compensation? What does the passage say about this? First line, the bill also envisages payment of a compensation on court orders. डीएम चेक वेक सब करवा सकता है लेकिन कोर्ट ऑर्डर से ही कॉम्पनसेशन मिलेगा. सो कैन द डीएम अवार्ड? यस तो है ही नहीं, एडी निकल गया. नो, कॉम्पनसेशन विल बी पेड बाय द पर्सन or compensation can be paid on court order. Who pays it is fine, but the court order is the first important step. So my answer is definitely C. Chalo. Red. Continuing. Red. Yes. Second thing is only the technical thing. So what is my passage about? What is defamation? Any false statement that harms another person's reputation. Right? If you harm somebody's reputation knowingly in a false manner, सम्मान को हानि पहुंचाना, जिसको हिंदी गुजराती में मानहानि बोलते हैं, राइट? किसी के सम्मान को हानि पहुंचाते हो, मानहानि का दावा जिसे बोलते हैं.
सो एनी इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन, पहले 4 शब्दों में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई. वन, इट हैज टू बी इंटेंशनल, नोइंगली, जानबूझ के आपने किया है, अनजाने में किया हो तो नहीं हो सकता. सो इंटेंशनल एंड फॉल्स कम्युनिकेशन, दैट मीन्स सच अगर बोल रहे हो तो भी डिफेमेशन नहीं हो सकता. जानबूझ के झूठ के हिसाब से, आइदर रिटन और स्पोकन, लिखित स्वरूप में या मौखिक स्वरूप में, इधर स्पोकन और रिटन, दैट हार्म्स अ पर्सन्स रेपुटेशन, decreases the respect, regard or confidence in which a person is held. आपकी तरफ मेरा जो रिस्पेक्ट है, आप में मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो अगर कम होता है, और induces disparaging, hostile or disagreeable opinion or feeling against a person, या आपके खिलाफ कोई ऐसे दूसरे लोगों से आपके खिलाफ अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं या ऐसे फीलिंग्स आते हैं जिससे आपका रेपुटेशन कम होता है, आपका ऑनर कम होता है, then it is known as defamation. So defamation is the act of making untrue statements about another which damages his or her reputation. Now, it is a statement that injures somebody's reputation. So defamation is the act of saying false things in order to make people have a bad opinion of somebody. Defamation may be defined as a communication to some person other than the person defamed. मैं आपकी नजरों में आपके सम्मान को कम नहीं कर सकता. Right? So for defamation, I should do or say something to a third party which reduces your honor in their eyes. So, other than the person defamed, of the matter which tends to lower the plaintiff in the estimation of right thinking persons. What is meant by a right thinking person? हाँ हाँ, तो किसी भी व्यक्ति के नजरिए में आपका इज्जत कम हो नहीं, जो दिमागी हालत से ठीक है, वैसे व्यक्ति के नजरिए में अगर आपका रेपुटेशन कम होता है, अगर मैं ऐसा व्यक्ति, मैं हर किसी को बेवकूफ समझता हूं और आपको भी बेवकूफ समझ लिया, तो वो तकलीफ मेरी है, राइट. बट ऑर्डिनरी पर्संस जो दिमागी तौर से ठीक है, उनके नजर में अगर आपका रेपुटेशन हार्म हुआ, तो इट इज डेफेमेशन. So defamation, to deter them from associating or dealing with them. Defamation is a wrong done by a person to another's reputation by words, written or spoken, sign or other visible representation. बोलो, लिखो, कुछ भी ऐसा करो जो सामने वाला व्यक्ति देख सुन सकता है, जिससे आपकी रेपुटेशन को हानि पहुंची. So defamation is of two kinds, libel and slander, and ये डिटेल में भी हमने देखा था जब both civil and torts कर रहे थे. If the statement is made in writing and published in some permanent and visible form, then it is called libel. Whereas if the statement is made by spoken words, then defamation is called slander. And ये 499 500 IPC के अंदर आता है. So 499 it talks about what is defamation. 500 it talks about punishment to defamation. Now, procedure क्या है? A victim to win a lawsuit has to prove that the false statement was made and published and the same caused injury to the reputation of the victim. तो मैं अगर आप पे डेफेमेशन का केस कर रहा हूं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा क्या? 2 चीजें. एक तो जो स्टेटमेंट आपने किया था वो फॉल्स था और वो आपने किया था और पब्लिश किया था. एंड सेकेंड, मेरे रेपुटेशन को हानि पहुंची है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा कि व्हाट हार्म डिड आई सफर. मैं ये नहीं कह सकता हूं इससे हो सकता है, नहीं, हुआ है, ये प्रूव करना पड़ेगा. However, there are defenses which can be raised, such as true statement. अगर आप पे डेफेमेशन का केस हुआ है, तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? वन, अगर आप प्रूव करते हो कि जो आपने कहा वो सच है, और इफ इट वॉज अ फेयर एंड ऑनेस्ट कमेंट, जो आपने कहा वो ऑनेस्ट कमेंट था या फेयर था, यानी कि कोई भी आदमी इसके पीछे इरादा ये नहीं था कि आप मेरे रेपुटेशन को हार्म करो, आप एक कमेंट कर रहे थे ऑनेस्ट तरीके से, और द क्रिटिसिज्म वाज मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में अगर जारी की गई हो वो कमेंट, तो भी इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफेंस. बट नहीं अगर कर पाते, मैं प्रूव कर पाता हूं कि आपने जो किया वो फॉल्स स्टेटमेंट है, जानबूझ के किया है और मेरे रेपुटेशन को कम करने के इरादे से ही किया है, then I can have the case of defamation against you. Clear? Yeah. Okay. So now tell me. 2 employees in an office wanted to poke fun at their colleague and began to reveal sensitive messages he had sent to other female colleagues in the office. He wishes to sue them for defamation. Will he succeed?
A. Okay, got the section 419 वाला doubt ना? हाँ, doubt clear. Okay. हाँ? A. Will he succeed? You're saying yes, the publication was with the intention to injure his reputation. A के साथ कौन कौन है? E. C says no, since the publication was not false but of matter that happened. A के साथ कौन कौन है? C. Any? Difference between C and D. So you're saying no, No, definitely no. but between C and D. Okay. And you're saying A, which is yes. A says yes, the publication was with the intention to injure. C says no, since the publication was not false. D, no, since the employees only wish to poke fun and not injure his reputation. Okay. Let's go with A first. Why? Because even if it was factual, what A published, Pati क्यों? but there were two. Pati क्यों? It should either be honest or it can. It does not either be honest or be. The statement must be false and intentional. It is not or. So, do you mean to say that if I intend to do that and say something true? No. Both the criteria have to be met. First, it must be a false statement and you must have the intention. It's not an either or condition, it's an and condition. A तो नहीं है, B भी नहीं है. Now, between C and D. B भी लग रहा है. So, if their intention was not to poke fun, Why would publish it? huh? Why would they publish it? My intention is not to poke fun. My intention is that people start hating you, and I publish it. Huh? No, तो He still will not succeed, na? true है वो temporary वैसे 1000 की है. My first requirement is that the statement must be false. True है सब. If the statement is not false, matter finish. उसके आगे देखेंगे ही नहीं intention क्या है. Because truth is the ultimate defense. He had actually sent the messages and they simply published it. So did they say anything false? No. Then how does the intention matter? So then between C and D also? C. C. Only if the statement is false, then you will go ahead and check the intention. If the statement is true, तो आपके intention से कोई फर्क नहीं पड़ता because defamation का case हो ही नहीं सकता इसमें. The first requirement is that it must be a false statement. So my answer clearly in this case has to be C. Will he succeed? No. Why? Because the publication was not false. It was of matter which had actually happened. Getting it? Yes. Intention will come into play only if the statement is false. And that's you have to be very careful. Is it an and wala requirement or wala requirement? The chief minister was regularly criticized by the people for his strange policies. Now, one such journalist published very scathing remarks on his administration and policies. The article was cited by many, including the opposition, and led to a huge fall in support. Will a suit of defamation succeed against the journalist? A. The last part says that if something is in the nature of an honest comment Public. or public interest, then there is no defamation. So now we have to consider this. Is a remark by the journalist against an administration and its policies, does it fall under Yes. public interest? Yes. Unless it is targeted specifically against the individual, it does not become a personal criticism. And anyway, he has been regularly criticized by the people. So if a person is doing it in as a journalist and against the policy, then technically he has to be protected, right? I don't know whether it's true or false, but if it is in the nature of public interest, then he's protected. So best option definitely A. Okay. A college student, while browsing online, came across disparaging information about a fellow student from his class. Thinking it would be funny, he circulated the same among his friends and soon it became viral. He later came to know that the information was fake. The victim filed for defamation under Section 499 IPCN 1. Was the court right?
E, Which one? E, D for Delhi. and U. Was the quote right? You're saying no. He only circulated among his friends and did not intend for it to go viral. So you're saying that it's not defamation. B. Intention था. Yes, he published it knowing it can injure the reputation of the victim. B for बॉम्बे के साथ. D for दिल्ली के साथ. A या C के साथ. कोई नहीं है. Why B for Bombay? Because the information is false. हाँ. Also, we Intention don't know that if it was his intention to harm the reputation, but he must be aware that it could harm his reputation. So going with B because of those reasons. D क्यों? intention था ही नहीं. मतलब वो इंटेंट नहीं कर इंटेंशन था ही नहीं उसको हम उसकी रेपुटेशन हार्म करने की. But information false. जहाँ तक वो लोग शेयर करेगा तो I don't know. वायरल होने पर जाकर उसको वायरल होगा. हाँ? और इंटेंशन थी या ना थी उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक ही ना फर्क पड़ता. पढ़ता है नहीं पढ़ता है. पड़ता है. Let's see what the passage says. फर्स्ट स्टेटमेंट था ना पड़ता है. An intentional false communication. इंटेंशन ना हो तो कैसे मतलब So let's see what the law says. 499 says, whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to defame that person. So it's not necessary that you intend to do so. 499 wording says that even if it's possible for you to know that it can harm the reputation of a person, then also it can fall under defamation. बोल डाउट क्या है? कुछ पूछ, टेंशन मत ले. वो सोचा ही बनी है तो फ्रेंड में ही उसने सर्कुलेट किया था. Defamation requires only one third party. Friends third party में नहीं आते. First person is the person making the claim. Second person is the person against whom the claim is made. Any other person is a third party. तो सिर्फ दोस्त काउंसलर नहीं होते क्या थर्ड पार्टी में? Right? Other than the person making and the person against whom it is made, any other person will fall under third party. And here, does he know that there is a potential of the reputation of the harm to the reputation of the person? Yes, because first of all, his intention was to poke fun. So in that case, B. Was the quote right? Yes. Why? Because he knew it. He knew and still published it. Intent, I don't know, but intent alone is not enough. Right? Even knowledge that it is possible that this thing can happen is enough to put you in trouble. Prishna says he only got to know that the information was false afterwards. Okay, now this is very interesting. Let's see. Does the law says that knowing about the truth of the information, or does it say that false information? If I अगर मैं 499 की clarity से नहीं बोलूं तो it says any intentional false communication. That means my communication was made intentionally and the communication was false. It does not say I have to know that it is false. It only says what I said has to be false. Whether I had knowledge of it being true or false is immaterial in this case. Right? So if it says I knowing about the falsity of the statement presented, तो बात अलग है. But यहाँ पे it does not say that I have to know that it is false. It says that it has to be false. So that's why B is my best option. Correct? Okay. Now, Hari heard from his friends that Ravi was making fake rumors about him to harass him. On the basis of this, he filed a suit for defamation. Will it succeed? B.
B. आपने आपके दोस्तों से सुना है कि कोई और आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है, सही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। राइट? तो सिर्फ इतने पे अगर आप केस फाइल करोगे तो आप जीतोगे तो नहीं, यू हैव टू गिव प्रूफ. सो विल इट सक्सीड का यस वाला ऑप्शन तो निकल गया. अब नो के अंदर this alone cannot prove that the false statement was made and published. Yeah, as Hari does not know himself whether this is true or not. I don't need to know myself. I need to prove that it has happened. So my best option in this case is definitely B. सिर्फ किसी के कहने पे आप फाइल नहीं कर सकते. Do you know what is the technical term for this? कोई आपको कहता है कुछ हुआ है और उसके बेसिस पे कोर्ट नहीं मानेगा. What is that known as? There is a single word for it. What is such evidence known as? आपको कोई कहता है कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, क्या इस चीज को आप सबूत की तरह पेश कर सकते हो? व्हाट इज सच एन एविडेंस नोन एज? इट्स अ 7-letter वर्ड स्टार्टिंग विद एच. एनीवन? अक्षता, यस. It's called hearsay evidence. Have you heard the word hearsay? Hearsay. तो hearsay means किसी और ने कहा और आपने सुना. It's not first hand evidence. आपने खुद ने नहीं सुना, किसी और ने सुना और वो अगर आपको बता रहा है, then such an evidence will be known as hearsay. आपने अगर खुद सुना, it's called first hand evidence. बट किसी और ने सुना और वो आपको बता रहे हो और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, it is only called hearsay evidence and the court does not accept hearsay evidence. Okay. Now, an angry neighbor, after having enough of the noise pollution emanating from Rohit's house, made a poster referring to Rohit as son of a donkey and emailed it to him. Can Rohit successfully file a suit of defamation against the neighbor? No. It should be to a third party. Right? मुझे गधा बोल के मुझे ही मेल भेजा है. फॉल्स है, लेट्स अज्यूम है. इंटेंशन टू reduce my reputation in the eyes of a third person. मुझे ही अगर उसने मेल भेजा है तो फिर कौन सी थर्ड पार्टी बीच में है? लेकिन अगर मैं ये मेल अपने दोस्त को बताता हूं, then does it become defamation? No. The sender has to send it to a third party. आप मुझे मेल भेजते हो, मैं दूसरे को, उसने थोड़ी ना तीसरे बंदे को बताया है, मैंने किसी और को बताया. उसका इरादा थोड़ी था कि दूसरा कोई देखे. बड़े कॉन्फिडेंटली ये मैं, मेरे को कोई गधा बुलाता है, मैं जाके किसी और को बताता हूं, तो उसने थोड़ी ना किसी और को बताया है यार. वो बेचारा क्यों तकलीफ में आ जाए? है तो प्रूव हो जाता है कि ट्रू स्टेटमेंट है. But in this case, there is no potential to injure Rohit's reputation because the injury to a reputation must be in front of a third party. खुद की नजरों में आप कितना ही गिरोगे? ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं हम खुद की नजर. हम खुद के बारे में जानते, हमको हमारी नजरों में क्या गिराओगे तुम? और चलो, hmm? To cripple something means to make something less powerful. किसी को लूला लंगड़ा कर देना. तो जो इरादा है उसको ही आप कमजोर कर देते हो. Okay. Right?
Disturbing, right? What the High Court said. Yes. Right? Yes. Terrible judgment can even be given by a high authority like a high court, which only goes to prove that even judges are humans. And sometimes application of law is not necessarily justice. What was the case? So the Supreme Court has stayed a controversial Bombay High Court verdict which acquitted a man found guilty of assault under protection of child from sexual offences POCSO Act on the grounds that he groped his victim over her clothes and there was no skin to skin contact between them. एक बंदे पे केस हुआ था कि उसने किसी लड़की को छेड़ा है, राइट? अंडर पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो हाई कोर्ट है महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, वो सर ये पॉक्सो के अंडर गिल्टी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसने कपड़ों के ऊपर से हाथ लगाया है और स्किन से स्किन का संबंध नहीं हुआ, इसलिए पॉक्सो के अंडर नहीं आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तुम्हारा जजमेंट गलत है बॉस. बॉम्बे हाई कोर्ट सेड इट ही इज नॉट गिल्टी बिकॉज स्किन से स्किन का टच नहीं हुआ, कपड़ों के ऊपर से उसने हाथ लगाया. सुप्रीम कोर्ट सेड नॉट नथिंग डूइंग. It says a bench led by Chief Justice of India Sharad Bobde took cognizance instantaneously after Attorney General K.K. Venugopal made a special mention in court, saying that the High Court decision would set a very dangerous precedent and cripple the intention of POCSO to punish sexual offenders. तो ये जब केस हुआ था तो जो वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इस बारे में कोर्ट में जब कहा, सुप्रीम कोर्ट में, कि हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पे पास किया है कि वो गिल्टी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली उस पे ये पास किया. नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आता है उस पे ही वो जजमेंट करती है, लेकिन यहां पे किसी ने कंप्लेन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सामने से ऑर्डर को स्टे कर दिया. बोला अगर हम हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को ऐसे ही आगे चलने देंगे तो पॉक्सो जिसके लिए किया गया है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. पॉक्सो इज टू प्रिवेंट sexual abuse of youngsters, minors, women, and if this particular judgment of the high court is allowed to remain, तो पॉक्सो का मतलब ही नहीं रहेगा. तो immediately without anybody filing a case, Supreme Court itself passed a stay order. Now a single judge of Bombay High Court's Nagpur bench created a furor after it acquitted a man under POCSO Act and held that an act against a minor would amount to groping or sexual assault only if there is skin to skin contact. पूरा केस कब चालू हुआ? जब नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बंदा गिल्टी नहीं है. क्यों? क्योंकि कपड़ों के ऊपर से उसने छेड़खानी की है और स्किन से स्किन का कोई संबंध ही नहीं हुआ था. The High Court had concluded that mere touching or pressing of a clothed body of a child did not amount to sexual assault. कपड़ों के ऊपर से अगर आप कुछ भी करते हो तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है इस हाई कोर्ट के हिसाब से. The accused was sentenced to a minimum 3 years imprisonment under Section 8 of POCSO Act that was set aside by the High Court, and his sentence was reduced to 1 year under Section 354, assault of a woman to outrage her modesty of the IPC. लोअर कोर्ट ने उस पर गिल्टी का वर्डिक्ट किया. हाई कोर्ट के सामने जब आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, पॉक्सो के अंडर ये गिल्टी नहीं है. तो जो लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी उसको कम करके 1 साल की सजा में कन्वर्ट कर दिया हाई कोर्ट ने. दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग. वेणुगोपाल सबमिटेड. वेणुगोपाल अब अटॉर्नी जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बॉस बहुत खतरनाक चीज है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मिस्टर वेणुगोपाल, डू यू रिमेंबर हाउ वी टुक कॉग्निजेंस व्हेन अटॉर्नी जनरल मेंशन्ड अबाउट अ जज ऑर्डरिंग अ पब्लिक हैंगिंग? चीफ जस्टिस आस्क्ड मिस्टर वेणुगोपाल, हु सेड ही डिड. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे सामने आप सिर्फ मेंशन भी करोगे तो आपको हमारे सामने केस रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस पर एक्शन लेंगे. जैसे किसी एक जज ने पहले कहा था कि किसी को फांसी की सजा दो और उसको भरे बाजार लटका दो. कानून के हिसाब से ये नहीं हो सकता. सो हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया था. द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स एनसीपीसीआर had earlier asked the Maharashtra government to urgently appeal the High Court judgment. एनसीपीसीआर ने भी कहा महाराष्ट्र कोर्ट को, भाई ये हाई कोर्ट का जज क्या बोल रहा है, इसके खिलाफ इमीडिएटली अपील करो सुप्रीम कोर्ट में. Meanwhile, several organizations, including Youth Bar Association of India, represented by Advocate Manju Jaitley, also moved the top court against the HC judgment. एनसीपीसीआर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि ये तो गड़बड़ है. जो यूथ बार एसोसिएशन है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस रख दिया. ये द पेटिशनर, अब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस रखा, दे सेड दे वर बैडली perturbed to notice that HC verdict contains several observations about the victim child's modesty which were both derogatory and defamatory. उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो विक्टिम बच्चा है उसके खिलाफ ऐसे ऐसे चीजें कही हैं जो कोई भी सेन व्यक्ति नहीं सुन सकता. इनफैक्ट द चाइल्ड वाज इवन नेम्ड इन द जजमेंट. यू कैन नॉट गिव द नेम ऑफ अ विक्टिम, स्पेशली अ माइनर. एंड कोर्ट ने भरे कोर्ट में बंदे का नाम, विक्टिम का नाम लिया है जजमेंट के अंदर. Abuse and outraging the modesty of a child has been a matter of great concern. POCSO Act was enacted to deal with evil and to impart speedy justice. POCSO का कारण ही ये था कि जो माइनर्स के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, उसको रोका जाए. Special courts were formed. The observation in the judgment of the High Court have badly shaken the belief of the petitioner and like-minded people, the petition said. तो जिन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उन्होंने भी ये कहा कि पॉक्सो का मतलब ही ये था कि जो असॉल्ट ऐसे हो रहे हैं उसको रोका जाए. पॉक्सो के वजह से हमने कोर्ट सेटअप किए जो फटाफट न्याय दे, और हाई कोर्ट ही उसमें ऐसी सब चीजें हरकतें करता है तो हमारा तो कानून से विश्वास उठ गया है. विच वॉज द राइट जज, राइट थिंग, राइट. चलो, now imagine that the decision of the High Court was not stayed and acted as a good precedent. Then in future, because of the order, can an accused claim innocence under the POCSO Act by arguing that the child he assaulted was clothed and there was no direct physical skin-to-skin contact between them? B. कौन सा? B. B for Bombay. क्यों? You're saying can you claim innocence? You said no, because the said decision made direct physical skin-to-skin contact not necessary for prosecution. Yeah. First of all, decision of the High Court was not stayed and acted as good precedent का मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सही है, तो उसका मतलब क्या हो गया लॉ? कि पॉक्सो के अंडर गिल्टी होने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी है. इस केस में क्या स्किन टू स्किन कांटेक्ट था? नहीं था. दैट मींस पॉक्सो के अंडर मैं गिल्टी नहीं हूं. क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया है. तो अगर ये हाई कोर्ट जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट वैलिड कर देता है, दैट मींस पॉक्सो के अंडर गिल्टी होने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी हो जाता है. सो इन दिस केस कैन ही क्लेम इनोसेंस? यस. सो नो एंड डिपेंड्स तो है ही नहीं. आंसर इज यस, because the said decision made direct physical skin-to-skin contact necessary for prosecution. Yes. Are you getting it? Now, in a case relating to a sexual offense, the name of the victim was highlighted in the order of the court. Decide based on your understanding of the passage. Sine qua non is a requirement. कौन सा? D for Delhi. So it is not a good practice, should be avoided. सही है. And as per the tone of the passage, the name of the victim should not be highlighted. वो भी सही है. Name of the victim cannot be highlighted, especially in cases of sexual assault and other things. That's why till date, not many know the name of who was Nirbhaya. उस निर्भया नाम से तो लॉ बन चुका है, but the actual name of the victim cannot be given out.
So in this case, both 2 and 3. Correct? Yes. You know the Nirbhaya case, right? Yes. Yes. Now imagine a situation that today in Nagpur, someone is charged with POXO Act and he seeks protection under the order of the Nagpur bench of Bombay High Court that there was no direct physical skin to skin contact. Can he do so? Please. Today. आज की तारीख में अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए कोई बोलता है कि यार मेरा भी कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था, हाई कोर्ट ने भी बोला था स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तो पॉक्सो नहीं लगेगा, तो मुझे बख्श दो, क्या उसको हम स्पेयर करेंगे? वाई? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ऑर्डर को. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर इज रॉन्ग. दैट मीन्स खत्म कहानी. यू कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर एन ऑर्डर विच हैज ऑलरेडी बीन स्टेड बाय हायर कोर्ट. सो इन दिस केस कैन ही डू सो? नो. वाई? सिंपल, स्टे हो गया डिसीजन. Correct? Okay. Now, when crimes against women are already covered in IPC, what was the need for protection of children from Sexual Offences Act, POXO? One, it was aimed at protecting the children in a better manner from sexual offences. Yes. It was aimed to bring more stringent legal provision in the case of offences related to children. Yes. It is aimed to reduce the workload. No, ये तो workload बढ़ाएगा. Yes. So both A and B. And a person was charged for the offence of molestation of a 22-year-old female. Can he be charged against POXO? Hmm? Right? It's for minors. POXO minors के लगता है. 22-year-old by no definition is a minor. So POXO is not applicable to A भी तो नहीं है, तो D भी नहीं होगा. So clearly Act is not applicable in this. Guilty yes, but not under POXO. बराबर छे. चलो नेक्स्ट. जो टेस्ट के लिए आ रहे हैं वो टेस्ट के लिए आज दोपहर को आएंगे. इवनिंग में भी आई एम नॉट हैविंग अ क्लास टुडे for good purposes. Any doubts, hang around. Otherwise online. एक second before you leave, I hope everybody got the message. If not, जो लोग इस साल CLAT IELTS दे रहे हैं, we are starting from 16th, that is Monday evening 7:30 to 9. So the schedule will be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday को 7:30 to 9 online. Saturday, Sunday we will go according to the same schedule of legal on Saturdays and GKCA on Mondays. बाकी Monday to Friday 7:30 to 9 only online mode में on Zoom we'll be having the classes for those who are giving CLAT IELTS in this year. चलो अटेंडेंस लेंगे फिर टाटा बाय बाय सी यू करेंगे.